वैसे कृष्णा है तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट, मुझे पर्सनली काफ़ी क्यूट लगता है. क्या बोलती कंपनी, वेलकम टू Mishi Unfiltered, where we react to Desi hip hop and a whole lot extra on the side. Today we are reacting to the fourth song from the Budges EP, which is Paisa Paisa by MUA Bunter. Yes, I know I'm a little late for the party, but please don't come at me for that. I've been drowning myself with assignments and exams going on. And to be very honest with you guys, I have heard this song in bits and parts on Instagram Reels, but I haven't heard this song in full, and I already know that MUA has taken shots at multiple artists from the scene, and this reaction is still gonna be raw. वीक भर देने से मैंने नहीं बढ़ता है, इशारा काफी है कहना नहीं पड़ता है, छोड़े अमीर बताने जताने छाती पे अमीरी पहना नहीं पड़ता है, लफ्ज मेरे खोल रखे स्टोर छाती पे अमीरी पहनना नहीं पड़ता has to be definitely for MC Stan. He's known for wearing a lot of amiri, and here MUA is seen to be saying that in order to look rich, he does not need to wear branded clothes on himself. Now going back to the verse where he says weak bars मतलब इनके बार्स वीक हैं, इसीलिए इनकी महीने की कमाई नहीं बढ़ पा रही है, which is definitely for his ops. छोड़े अमीरू बताने जताने छाती पे अमीरी पहना नहीं पड़ता, लफ्ज मेरे खोल रखे स्टोर जैसे थर्मस में ट्रैवल करे ग्लोब मेरे बोल तेरे फंगस में मजा नहीं है दोस्त चले फुट थोड़ा कम चम्मच में दुखे तक आए तुझे समझ. So again, with the flexing game on, MUA has just said that his music or the kind of music that he makes is at a global or an international level, whereas for his ops, their music is just too mediocre. So to them, he's just basically saying to chal foot. ग्लोब मेरे बोल तेरे फंगस में मजा नहीं है दोस्त चले फुट थोड़ा कम चम्मच में दुखे तक आए तुझे समझ में फेंकता तू बहुत तेरे बातें बेकियां ब्राउन मुंडा भाई तेरा हाथ में एपी हाफ लो करूं मैं तो फिर लास्ट. Again, MUA has done the wordplay on the word AP, which is a shout out to AP Dillon and the watch that he's wearing Audemars Piguet. फेंकता तू बहुत तेरे बातें बेकियां ब्राउन मुंडा भाई तेरा हाथ में एपी हाफ लो करूं मैं तो फिर लाशें बहतियां काम तेरा आम सिर्फ लाते पेटी आप पूछ नरम काम तेरा आम सिर्फ लाते पेटी. आई थिंक ये एविडेंटली सबको समझ गया होगा दैट आम एंड पेटी वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑफ हिज ऑप्स, विच इज़ आम दैट इज़ एवरेज एंड पेटी मीन्स lakhs. So the ops are making an average music, which is why they're only earning in lakhs. हाफ लो करूं मैं तो फिर लाशें बहतियां काम तेरा आम सिर्फ लाते पेटी आपूस नरम तू कापूस बच करे जापूस स्टाइल अपना मस्ते बे जबकि भी लेते नहीं जब होते काम पे प्यारा सा पप्पी तू रास्ते पे बस देते गाने हम स्ट्रीट से ऐसा वाला जो बनाए फकीर को पैसा वाला लाइसेंस खरीदने को पैसा डाला लाया ईपी में शाहरुख और मुझसे वाला. RIP to Sidhu Paji. पैसा पैसा पैसे को खाएगा क्या. Call out to Raftaar, and I think हम लोग वापस से अब गड़े मुर्दे उठाने बैठे हैं because obviously beef sells and everybody knows that. पैसा 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 पैसे को खाएगा क्या. खाली आता है तो दुनिया में वापस से लेके कुछ जाएगा क्या. भाई कोका दो होगा ना खिलाओ रे इसको काली कैडिलैक मिली ऑन माय नेक धीरे जागते ड्रीम मिली ऑन माय नेक. ऑब्वियसली अमीर दिखने के लिए अमीरी नहीं पहनना पड़ता है, पर VVS का नेकलेस ज़रूर पहनना पड़ता है. So while we are at it, let's just break down the outfit for the video of MUA, which is the NYC Yankees for the cap that he's wearing, and for the pants and the bracelet that he's wearing, it has to be Rick Owens, and we know MUA loves Rick Owens from all of his previous videos and his Instagram handle as well. Talking about the boots, I'm not sure which brand he's wearing, but going on to the belt, I feel like we don't have to even mention that because वो वैसे भी अपना काम नहीं कर पा रहा है. पैंट तो फिर भी नीचे गिर रही है ना. भाई कोका दो होगा ना खिलाओ रे इसको काली कैडिलैक मिली ऑन माय नेक धीरे जागते ड्रीम हो गाने बैक टू बैक एल्बम ऑन द वे इंटरनेशनल सीन.
I feel like here he's hinting to the DTA album or the Deen Aur Dunya album, which he has already teased about earlier on. And talking about the international scenes, I feel like it could either be hinting to the international collabs that he's about to make in the upcoming videos, or it could also mean that we will get to see a lot of international scenic views, which he has been giving to us lately. तेरे dream हो गाने back to back album on the way international scene हो जाने क्या ये rap करूँ ना collab लगूँ money machine oh मेरी तरह पूरी industry में बेटा कोई नहीं आएगा फिर हाँ करता तू flex हाँ तेरे पे जस्ता नहीं bro one पर एमी पे जचता है side कोई किधर लगता नहीं bro सजदे के अलावा देख लेना आजमा के किधर भी टिकता ये मत्था नहीं bro जब से कलम उठाया है हाथ में दिल में कुछ लगता नहीं bro बीफ में जब सब निकाल दिया तो दिल में क्या ही रख पाएंगे अभी जब से माइक के सामने मेरे लिए महंगा कुछ लगता नहीं ब्रो वर्सेटाइल इसलिए सब स्टाइल करता हूँ तू ये कभी कर सकता नहीं ब्रो किस तंदूर में डालो इस लंगूर को एक ही फ्लो बार बार करके ये पकता नहीं ब्रो नहीं करा मेहरबानी He is taking shots at Krishna over here by saying that versatile word, which clearly is for Krishna because Krishna is known for not being versatile in his style, whereas Emiway is known for being versatile in his style. And again, where he says ki same style karke thakta nahi bro, is that he's not able to try new styles. नहीं ब्रो किस तंदूर में डालो इस लंगूर को एक ही फ्लो बार बार करके ये पकता नहीं ब्रो नहीं करा मेहरबानी बना गाना तो दीवानी बनी दुनिया हमारी आंखों का तो सुपारी बेटा जड़ी बूटी काला वाला फूके अपन खूब मैं तो ताला लगा डाला बुरे आदतों से दूर रहने चले यहाँ का चला तुझे मालूम है तो नूब बेटा पास नहीं है तू जाके पढ़ ले स्कूल तेरा भाई मेरा भाई मैं नहीं तेरा भाई गली बॉय भी नहीं आए बंदे तब से वेरीफाइड Where he's talking about the Gully Boy movie, वो ये बोलना चाह रहा है बेसिकली कि जब गली बॉय आई भी नहीं थी Emiway was verified and popular in the scene. And Gully Boy आने के बाद हिप हॉप सीन एक्चुअली फटा था. So he's flexing again about himself over here. तू जाके पढ़ ले स्कूल तेरा भाई मेरा भाई मैं नहीं तेरा भाई गली बॉय भी नहीं आए बंदे तब से वेरीफाइड बेड़ा इन्हीं में नहीं मानी अभी जेब में खाली मनी आए दुनिया है फनी ऊपर से रैपर भी फनी बेटा एकड़े न को दिखड़े बस भी दिखने में तो क्यूट देखो चिकने. And here I can see Emiway mimicking Krishna from his song Knock Knock from the album Yours Truly. अभी जेब में खाली मनी आए दुनिया है फनी ऊपर से रैपर भी फनी बेटा एकड़े न को दिखड़े बस भी दिखने में तो क्यूट देखो चिकने बच्चे कितने बच्चे करने आ रहे रूल में तो दिखने भी नहीं देता बेटा गया क्या तो भूल तेरा लेबल दे रहा पैसा तो फिर इधर आके क्यों. I like the part where they have cut the portion कि लेबल पैसा दे रहा है तो इधर आके क्यों पैसा पैसा करती है. I like that portion quite a lot. दे रहा पैसा तो फिर इधर आके क्यों. धीरे जागते ड्रीम हो गाने बैक टू बैक एल्बम ऑन द वे इंटरनेशनल सीन हो जाने क्या ये रैप करूँ ना कोलैब लगूँ मनी मशीन ओह मेरी तरह पूरी इंडस्ट्री में बेटा कोई नहीं आएगा फिर. Let's get our Naughty Moan on to give my opinion on the song. Looks good. Emiway's video presence in Paisa Paisa is just top tier. You can see from the production quality that a lot of vision, effort and a budget went into the video. And knowing that he's an independent artist and all of this money is coming out from his own pocket, it's a major respect. From shooting in the mall parkings to shooting in Dubai with all of these branded cars and renting a place there, it's a commendable journey. The mix and master by Vasudev with Tony James on the production was clean and powerful. Honestly, all of the tracks from the Budges EP are solid, but this song has to be my favorite. It's energetic, groovy and catchy, and it gave me flashbacks to listening to the songs of Paisa Paisa from De Danadan. And I feel like he's done justice to the sample. He did not just make it his own, but he also respected the original song. Now, let's address the elephant in the room, which is shots being taken at artists like Stan, Dollar, and Raftaar. While I appreciate the clever jabs and the tease about his new album, I do feel like Emiway is still clinging on to the earlier beefs with Raftaar and Krishna. Also, while we're at it, let's face it. It's a fact that Krishna also takes shots at Emiway. However, they are not as energetic as Emiway does it.
Also, I feel like Raftaar and Krishna have already moved on. So the disses don't feel as powerful as they did earlier on, and I don't see them reacting to these shots anytime soon. However, it could be quite interesting if they did. That said, MUA knows how to play to his strengths, owing to his independence, the versatility, and his constant evolving. That said, MUA knows how to play to his strengths, owing to his independence, the versatility, and his constant evolving. We've also seen him learn the drift within 3 minutes or maybe less than 3 minutes. I saw it on his daily vlog and it was quite fun to watch. This track really took me back to the old days, and if this video performs well, I might just revisit and react to the previous beefs. That's it for today's video. Like and share it with Bantaigi Public, and don't forget to hit the bell icon so you don't miss my next video.